We just wait for 2 minutes for joining the audience or Yeah, we can wait. okay. 11 watching. Guys, we are started in just 2 minutes. Waiting for the joinings. Okay, ma'am. So we can start now. Sure, yeah. So first of all, the introduction basically. Sure. So, hello everyone. Yeah, I'm Anshima and I'm working as a software developer at Microsoft. And I have around 3 years of experience. Before Microsoft, I worked with MakeMyTrip for 1.5 years and 1.5 years in Microsoft. So, that's my experience. And one more thing, ma'am is also 2018 MUN winner at Harvard University. Yes. You forgot this. This is also an No, achievement, na? definitely. So yeah, that was a Model UN conference from NSIT Delhi, and each year a delegation is sent for about 13 to 15 people, and we participated in that Harvard MUN, and we also won an award. So we got the Outstanding Delegate Award. So that was something which puts a feather on the cap. So that was an amazing experience. Apart from the typical technical stuff that I do at Microsoft. Yeah. Sure, ma'am. So, guys, मुझे तो आप सब जानते ही हो. You are familiar with me. I am Raghav from the Sorex network. And from your love and support, now we are a 2.5k big family now all over the India and at the international level also. So let's begin the today's podcast. So, ma'am, my first question is based on Chat GPT and the Microsoft stuff basically. Okay. What sparked your initial interest in technology and how did that interest evolve into a passion for software engineering? Okay. So when I was in class fifth, I know that sounds like long time back, but there was a language called Q Basic and Visual Basic. I'm not sure if you guys have heard about it, but it's like a very basic programming language developed by Microsoft back in 1991 or something. So that was the first time I actually coded. And I loved it that with a few lines of code we can actually create something on the computer. So I was fascinated from that moment on. And then in education and academics also I keep on pursuing computer science. And even in 11th 12th people go for physical education, music for good marks, but I was like, no, I'm going to take computer science. And that is when I developed my love for Python. And my class teacher Meena Dogra had a very big hand in it, so she kept that interest alive, and later on I kept loving it. So by the end of 12th I was like, engineering to सिर्फ NSIT, sorry, सिर्फ CSC ही करनी है. So no matter what college, I'm only gonna do computer science. So that was So, my guys, ma'am aim. is a brilliant student from school. ऐसे स्कूल फेज ये सबका सब सेम तो नहीं नहीं होता. मेरा तो है. I also opt for physical education. हाँ. I thought for the that time I thought for the good percentage only. अच्छा. तो Yeah. आई वाज लाइक, क्या कंप्यूटर साइंस में मुझे भरोसा था कि इट हैज़ लॉजिक एंड इट इज़ इक्वल इनटू मैथ्स ओनली, तो इसमें मतलब पूरे नंबर आ सकते हैं. पूरे तो नहीं आए वैसे, बट आई स्टिल लव द सब्जेक्ट. एंड आई वाज लाइक, अब तो इंजीनियरिंग होगी तो सीएस में ही होगी. So that was fixed from that point. And then that actually came to life, that happened. And I joined NSIT, and वहाँ पर भी I got all the opportunities. There was a very good coding culture there. So that kept my interest
even more and more. So I just dived deep into it, and here we are. नाइस मैम. मेरा भी स्कूल टाइम में बेसिकली टेक में इंटरेस्ट तो था, पर आई डोंट नो द वे हाउ टू Hmm. गो. देन आई कम टू कॉलेज में. स्कूल टाइम में आई पार्टिसिपेटेड इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, मॉडल Huh. टाइप साइंस एग्जीबिशंस, तो तब से ही थोड़ा टेक में इंटरेस्ट था. देन व्हेन आई कम टू कॉलेज फर्स्ट ईयर, आई मीट सम गुड सीनियर्स. Hmm. One of them is Mayank Bhaiya, Hmm. and our community also know the founder of Sorex Network. Right. And then the vision come in my mind that how I have to pursue the engineering. Then up to it's third year now and I'm going good. So Awesome. that is it. I think mentors play a very important role. Yes, So ma'am. Yes. from school only, I had really good computer teachers in 11th, 12th especially. And then in college also, the seniors were amazing. We have a very good, I would say, rapport with the seniors. They were eager to help, always ready, always there on your beck and call. So amazing. Mentors are really important. Yeah, ma'am. Mentors are really important in life. Definitely. In every part of life, चाहे वो आपकी स्टडीज हो या पर्सनल गाइडेंस हो, सब में mentors are play a very crucial role. Definitely. So after this we'll move to our next question. आज मैम से क्वेश्चन पूछने हैं गाइस. आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. आज हमारे पास बहुत ही गोल्डन चांस है. थोड़ी देर मैम को तंग करेंगे हम. By all means. तो मैम, द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड योर एकेडमिक एक्सपीरियंसेस एट एनएसआईटी एंड हार्वर्ड शेप योर अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड योर करियर एस्पिरेशंस? Hmm. दिस इज आवर So, कम्युनिटी क्वेश्चन. okay. So, talking about NSIT, I think what really stood out for me was the peer group. So, there was a brilliant set of minds that was there already. So, when I entered into the CS classroom, I was just another, girl or a boy interested in coding. Everyone there had this mindset that they were already so much eager to learn and eager to explore and also to photo in life. So everyone there was an overachiever. So the innovation, the motivation that you get from the peers is amazing. So when everyone is doing so well now, you also feel like, okay, I'm in this class, I have to level up. I have to keep my learnings and be on quick foot to actually be able to compete with the group that I am in. So that really motivated me to work harder. And there were a lot of discussions we used to have with regards to projects and all. So when I could see that okay, people are creating brilliant things, then even I was eager to go towards that. And our mentors, as I already mentioned, our seniors were the best, I would say, opportunity providers, because they used to tell us that okay, this is all what we did and this is what extra that you can do in order to ace. So we always learn from them, and experiences are the best way to learn. So even this is like an experience chat, right? So या मैम. whenever you listen, whenever you talk to your seniors, they are gonna give you the best advice that is possible. From I'm telling you by experience, seniors are unmatched. So rely on them heavily and make sure you have a good network. So a very good way to have a rapport with seniors is you join societies, you join coding groups, you join, there are a lot of culture groups also. Any debating societies, I was very active in debating societies. And then any groups which has seniors in it. So initially you start off with any common grounds, and then later on you can just ask them your doubts or whatever you are facing, whatever obstacles that you have. So that helps you build that network. If you don't join those societies, it is usually hard to just randomly approach a stranger senior and be like, hello bhaiya. So that might not be easy for you, but if you join societies, that path is very easy. So it is easy to connect with those seniors, and they are there with you for a longer duration. That's Yeah, there. that junior senior bond is so Important. important. Yeah. Yes. And talking about Harvard, I guess my major learning from that experience was
collaboration and teamwork. So basically, we had delegates from all around the world. We had delegates from Venezuela, Latin American countries, Africa, Pakistan, and all of the countries that you can imagine. So what we had to do, we had to work on a common goal, and we had to draft a resolution for that. And we had to sit together and brainstorm and think about all the possible solutions that could be provided. So this is where we really rocked it. And we all had to work as a single unit so that we are only able to come up with one draft resolution which gets passed by the entire committee. Am I audible? I can't hear you, I guess. Yeah, Raghav, am I audible? I think your Yes, wife. ma'am. There is a network issue created. I think there is a power cut. No worries. So I was Yeah. just telling about the Harvard experience that teamwork and collaboration was the main, I would say, learning. Because when you have people from different countries, it's really hard to come on the same page. But this teamwork is something that helps you later in life as well. Even right now in Microsoft, when you work in a team, you should know how to collaborate, how to work together, and how to be a contributor, how to be essential towards the major goal, which is, let's say, a product or a service that you are providing or making. And definitely, and even Steve Jobs said that, all revolutionary ideas cannot be done by one person. It has to be a team behind it. So that teamwork was the major learning, and develop it from the college itself. Do hackathons, participate. The more you participate, the better it is for you to learn the team collaboration aspect as well. Do group projects, they are very helpful. Learn from each other. I'm not sure about the teachers in most engineering colleges. तो उनका तो पता नहीं चलता कि अच्छा पढ़ाते हैं कि गलत पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं. बट पीयर ग्रुप्स Yes. और साथ में जब प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो सीखने को बहुत मिलता है. सो जो बगल वाला जो भी दोस्त है वो समझाएगा ना, बेटर समझ आता है. तो मेक Yes. श्योर Yes. टू लेवरेज दैट, और हैकाथॉन्स में जाओ जितना जा सकते हो. उसमें भी तुम एक रात में जो तुम बना लोगे ना, वो तुम 2-3 महीनों में नहीं बना पाओगे. दैट इज डेफिनेट. So take part in hackathons. That is also very important. जो उस मैम साथ वाला ग्रुप होता है तो उसके लिए तो ग्रुप स्टडीज और वो इंटरेस्ट बेस होता है कि सब हमारे साथ के हैं, तो हाँ, दैट इज अ गुड थिंग. तो हमें भी उनके साथ काम करने में मजा आता है. तो समटाइम्स टीचर्स के साथ वो वाली जो एक बॉन्ड होता फीलिंग है ना नहीं आती. टीचर्स के साथ, हाँ. वो फीलिंग नहीं आती. और हम्म. हमारे साथ वाले फ्रेंड्स के साथ आती है, तो वो एक सेपरेट अच्छी बात है और होना भी चाहिए. और मतलब ये वो है ना कि चिल भी कर लो और काम भी कर हाँ लो, जी, तो इट्स काम भी लाइक कर लो, दैट इज अ बेस्ट. गुड थिंग. या. एग्जैक्टली. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एंड अबाउट द हैकाथॉन्स, तो जैसे आपने बोला कि जो आप वो 24 घंटे में बना लोगे वो आप पूरे 2-3 महीने, दैट इज अ राइट थिंग. बिकॉज देयर वी आर इन अ इन्वायरमेंट कि वहां पे हाँ, सब वही चीज कर रहे हैं, तो वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स कि हम भी वो करें, क्योंकि वहां पे एंड बिकॉज, इन्वायरमेंट ही वैसा होता है. हाँ, और डेडलाइन भी स्ट्रिक्ट होती है, तो सर पे डंडा भी होता है कि हाँ, सर बनाना है, पे. खत्म हाँ, करना अगर ऐसे बोले तो सर पे होता है कि करना ही है, खत्म करना, वी हैव टू फिनिश इट. है. एग्जैक्टली. तो तब यू आर मोटिवेटेड और फिर वो खत्म हो भी जाता है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न. और कॉलेज में तो हैकाथॉन्स जितने पार्टिसिपेट कर सकते हो उतने करो. एंड इवन इफ यू डू नॉट विन, यू विल लर्न अ लॉट. एंड जो विनिंग टीम्स हैं उनसे भी यू लर्न कि अच्छा उन्होंने ऐसा क्या अलग बनाया था दैट दे वन एंड यू डिड नॉट. सो एवरीथिंग इज अ लर्निंग. बस सीखते चलो एंड यू विल एस. यस. एवरीथिंग इज अ सो लर्निंग. सीखते रहो बस. यस मैम. So Ayush and Kunal, we'll come to your question in our next module. We are having this discussion also in our next module, so don't worry about it. So my next question for you is that what specific strategies and resources did you find most helpful in preparing for a successfully cracking top placement in the software engineering field? Okay. I think the Yeah. top two names that come to my mind is Geeks for Geeks and Lead Code. And I know सबको पता होगा, but जिनको नहीं पता है,
Lead code is your bap. Spend For the tech thing and the CS tech thing. study. Yeah. Yes. तो whenever you, so initially जब मुझ में confidence नहीं था कि यार कैसे करते हैं, how to solve, then I was on Geeks for Geeks. So I started off with that because it's easier there. और उसमें इतने सारे blogs भी होते हैं where you can see, where it is explained really well. So whatever doubts that you're having, whatever common questions that are there, वो सारे geeks for geeks से करो. And then once you are building confidence, धीरे धीरे you switch to lead code. Now the good thing about lead code is it has all the possible edge cases. The testing part in the lead code algorithm is very good, so it covers all possible test cases, so it makes you think even more, and that is very ideal for the interview process. And then lead code makes you time also, so there's a timer that goes on so that you know how are you performing. So make sure you time yourself and see how is your, how to improve that, how to solve the question in lesser time. So that is really important. And what other resources? I would say give mock interviews, and you can ask your seniors and your friends also कि bro let's just sit together और आज ही एक mock interview ले ले, एक तू मेरा ले ले, एक मैं तेरा mock interview ले लेती हूँ, and it will be done. So this is the best strategy. उससे एक simulation हो जाता है कि okay this is how we are going to see or proceed. So at least one or two you should give uh, before a major interview. ठीक है. And when it comes to lead code, you can target easy, hard, medium, so you can go in that order. And what I usually do is that choose a random question. उससे होता क्या है, you are not stuck on only one type of practice कि पता चला arrays ही करे जा रहे हैं या फिर अपना कुछ भी, या फिर ग्राफ्स ही करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना. इंटरव्यूज में कुछ भी आ सकता है. सो आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर द रैंडम क्वेश्चन पार्ट, जिससे जो वट एवर इज गिवन टू मी आई एम एबल टू सॉल्व इट. सो यू आर प्रिपेयर्ड. ऐसा क्योंकि सपोज ऐसा भी होता है इनिशियल स्टेजेस में यू कैन गो कैटेगरी वाइज, बट लेटर ऑन एज यू मूव टूवर्ड्स द इंटरव्यूज, random questions really help. And I think there's a list on Geeks for Geeks, which is called must do interview questions. There's an entire list of वो सारी I would say categories में है. Always do those questions, always, no matter what company it is. Those questions, that list is something which I stick by. It's a very good compiled list. तो वो कर लोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और वो लिस्ट ऐसी है कि वो उसमें से एक भी क्वेश्चन हो ना तो उसमें सारे पता होने चाहिए. इट्स नॉट अ लॉन्ग लिस्ट, फिर 40 या 50 क्वेश्चन होंगे, बट अगर वो तुमने सारे कर लिए तो बाकी प्रॉब्लम्स उन्हीं क्वेश्चंस की वेरिएशंस हैं. सो इफ यू नो द बेसिक थिंग यू कैन जस्ट वर्क अराउंड इट एंड गो टू द, आई वुड से, नेक्स्ट लेवल. So do those 40-50 questions. Ma'am, you have heard about the another platforms like LeetCode, Hacker Rank, and Hacker these. So, what is the main difference? I want to ask that everyone is majorly preferring the LeetCode only. Hmm. So So, there's, हाँ, मतलब क्या so अलग है? हाँ क्या लगा है और हम क्यों नहीं प्रेफर करते हैं हैकर रैंक एंड हैकरर्स को एज कम्पेयर टू LeetCode? यार लीड कोड पे द प्रॉब्लम्स आर अ लॉट. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सबके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं एंड डिस्कशन चैट्स भी अवेलेबल हैं. सो गिव योर सेल्फ टाइम, डू योर बेस्ट टू सॉल्व इट. नहीं होता सो यू नो कि हाँ देर आर पीपल हु हैव सॉल्व्ड इट इन लेसर टाइम्स. यू कैन लुक एट द डिस्कशंस, you can look at the various ways that other people have solved the problems. So after you solve your way, you can look at, oh, these many people have solved in in only 3 lines of code maybe. Suppose you wrote 100, they are only doing in 3. So you can just look at it and understand, okay, this is how I can improve. और and the best thing which I found about lead code is the edge case, क्योंकि उसमें जितने edge case थे ना मैंने कहीं नहीं देखे. हैकर रैंक, हैकर अर्थ, तो अगर आप लीड कोड के क्वेश्चंस के सारे एज केसेस आप कवर कर पा रहे हो तो फिर आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के क्वेश्चंस भी आसानी से कर लोगे. दिस इज व्हाट आई फेल्ट. एंड आई हैव लाइक इंटरव्यूज के टाइम पर जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे और जितने भी मैंने स्विच करने के टाइम पर भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे, बेस्ट मुझे लीड कोड ही लगा.
Ma'am, there is a question from the comments. Is it helpful solving daily PODD in GFG and daily challenges in lead code? You can do that. It is helpful. So back in GFG एक लीडर बोर्ड आता था साइड में जब मैंने प्रिपेयर किया था तब तो था एक लीडर बोर्ड आता था साइड में कि वीकली टॉप रैंकर्स कौन है। और हम अरे जीएफजी में ही कॉलेज का भी एक लिस्ट थी फॉर एनएसआईटी व्हाट आर द टॉप कोडर्स। तो बेस्ड ऑन द जीएफजी स्कोर्स दे वर यूज्ड टू रैंक अस। सो दैट रियली बिकेम माय मोटिवेशन कि यार आई वांट टू बी इन टॉप 100 इन एनएसआईटी का बैच। तो व्हेन एंड आई यूज्ड टू वर्क कि हाँ भाई सॉल्व करेंगे स्कोर आएगा एंड आई विल मूव अप द रैंक। एंड वी यूज्ड टू चेक आउट बाकी लोगों के स्कोर्स आल्सो कि अच्छा उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसका इतना स्कोर आ गया। तो वो देखा देखी में ना यू आई एम कम्पेटिटिव थोड़ा सा तो दैट रियली हेल्प्ड मी। आई लुक यूज्ड टू लुक एट द रैंकिंग्स आई वाज लाइक ओके आज 10 क्वेश्चंस करूंगी तो फिर मेरा स्कोर ऊपर जाएगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट। So that really motivated me. You can keep yourself anonymous also. That is fine. Have a username which is like AKXZ something या एलॉन मस्क के बेटे जैसे कुछ नाम रख के तो तो वैसा कुछ। तो दैट रियली हेल्प। डेली चैलेंजेस भी मस्त मतलब अच्छे होते हैं करने चाहिए एंड बिकॉज वो डेली होते हैं तो यू आर इन दैट रिदम कि हाँ रोज एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना तो 100 दिन के बाद या 4 महीने के बाद तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन तुमने कर रखे होंगे। तो इट्स द लिटिल थिंग्स दैट काउंट। वो नहीं होता बूंद बूंद से सागर भरता है। तो एक Yeah. क्वेश्चन रोज करोगे तो 100 दिन के बाद 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड 100 क्वेश्चन इज अ बिग थिंग। तो दैट रियली हेल्प। Uh, One more question there is, ma'am. I have been hearing from some projects that Python is not suitable to solve coding problems and it will not help much in interviews. Is it true? From Sai Uma Shankar. That depends on your preference. If you're really good at Python, go for it. I would not say it's bad for interviews or it is not preferred. You feel like practicing, that is the best. I personally think or Java are the best way forward because firstly they're easy to learn and they make your concepts really clear. So Python में there are a lot of shortcuts and उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से लिस्ट डॉट स्प्लिट और वो गिव द कोलन्स एंड वो तुम्हें पूरी लिस्ट बना के दे देगा। तो द लॉट ऑफ शॉर्टकट्स इन पाइथन जिसके पीछे का लॉजिक तुम्हें पता ही नहीं है और फिर तुम शॉर्टकट्स यूज कर करके चीजें करते हो पाइथन में। हाउएवर इन सी प्लस प्लस इनबिल्ट फंक्शंस थोड़े से कम है तो यू टेंड टू थिंक मोर। यू टेंड टू थिंक व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट शॉर्टकट। तो इसलिए सी प्लस प्लस जावा आर प्रेफर्ड। अदरवाइज इफ यू गुड एट पाइथन गो फॉर इट। उसमें कोई हार्म नहीं है। बस मेक श्योर इफ यू कोडिंग इन पाइथन डू इट इन लेस नंबर ऑफ लाइन्स। दैट रियली स्टैंड्स आउट कि वो उसने तो 3 लाइन में सॉल्व कर दिया और पाइथन में ऐसा हो भी जाता है कि लेस लाइन्स में यू आर एबल टू राइट द कोड। सो इफ यू गुड कोडर इन पाइथन गो फॉर इट। और जावा में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इफ यू प्रेफर इफ दैट इज योर स्टाइल ऑफ कोडिंग एंड गो फॉर जावा। कुछ लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है तो जावा से जाओ और फिर एस इट। इट्स फाइन। So basically, the code of Python is short and easy to understand. हाँ इट इज शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि उसमें शॉर्टकट्स बहुत होते हैं। Shortcuts बहुत होते हैं, yes. वो खुद के पाइथन ही प्रोवाइड कर देता है तो हमें पता नहीं होता कि इट इज डूइंग अ वेरी बिग जॉब फॉर अस। एंड मेक श्योर जो भी शॉर्टकट या इनबिल्ट तुम यूज करो फंक्शंस पाइथन में उन सबके तुम्हें वो पता हो से क्या बोलते हैं टाइम रेंज ओ एन की वो है या फिर ओ वन की है क्या क्या है उस सब का पता होना चाहिए जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है सो दैट यू आर एबल टू कैलकुलेट। So there is a question from Ayush. Ma'am, how frequently is a graph ओके and देयर इज DP अनदर asked in क्वेश्चन coding rounds? एंड इफ नॉट हाउ मच शुड वी प्रिपेयर फॉर इट। यार ग्राफ एंड डीपी ग्राफ डेफ अब देखो गूगल आई हैव गिवन लॉट ऑफ इंटरव्यूज आई हैव गिवन फॉर गूगल माइक्रोसॉफ्ट मेक माई ट्रिप ये तो इसमें तो है ही। देन इसमें डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंपनी ऑल्सो। फॉर गूगल दे विल डेफिनेटली आस्क यू ग्राफ
I have seen it in 80% cases. I'm not generalizing it, but if you're preparing for graphs, मतलब वो गूगल तो पूछता ही है. एंड डीपी ऑल्सो इज वेरी कॉमन आजकल, बिकॉज if they ask easy questions everybody is gonna ace it, right? So dp is how they make hard problems. So dp and dp में भी जो array वाले questions होते हैं ना, I think mostly array के ही, dp is club with array मोस्ट, आई वुड से. अगर उनको एक हार्ड प्रॉब्लम देनी है विच कैन बी सॉल्व इन 30 to 40 minutes, जितना इंटरव्यू ड्यूरेशन होता है, दे यूजुअली गो फॉर डीपी ग्राफ्स और डीपीज. दिस इज द हार्ड सेक्शन. तो कितना प्रिपेयर करना चाहिए? आई थिंक ग्राफ की जो बेसिक, एक तो आपको वही आना चाहिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये तो बेसिक है तो आना ही चाहिए. इसके वेरिएशंस कि जैसे रॉटन रॉटन टमेटोज प्रॉब्लम है और इस तरह की 2-3 और प्रॉब्लम्स हैं, वो आनी ही आनी चाहिए. तो कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो जिसके वेरिएशंस पे ही सब लोग खेलते हैं, वो कर लो. ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, बट बेसिक का इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें बेसिक पता है. अब इसके ऊपर वो थोड़ी सी ट्विक करके क्वेश्चन पूछ लें, थोड़ा सा इधर उधर कर दे वेरिएबल्स को, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ट्वीक एंड इम्प्लीमेंट इट देयर एंड देन. तो डू दैट. और डीपी तो पूछते हैं यार, डीपी अच्छे से कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार डीपी ग्राफ तो हार्ड है, ये तो कोई पूछेगा नहीं. बट फिर जब इंटरव्यू में आ जाता है, देन यू आर लाइक ओ यार ये तो आता ही नहीं है, देन यू आर अंडर कॉन्फिडेंट. तो प्रिपेयर डीपी एंड ग्राफ्स ऑल्सो. ग्राफ में बहुत हार्ड क्वेश्चंस मत करना, बट बेसिक वाले इतने स्ट्रॉन्ग कर लेना कंसेप्चुअली कि जरूरत ना पड़े हार्ड की, वो तुम खुद ही कर लोगे फिर. So moving on to our next question, ma'am. Can you share some valuable insights, tips for aspiring SDs on how to ace technical interviews and showcase their problem-solving skills effectively? Okay. So for this, I actually have a code for this. So that code is called LATER, which is later. So it is in a order. So L means listening, and listening to understand कि सामने इंटरव्यूअर क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, लिसन व्हाट द प्रॉब्लम इज, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, डोंट रश इनटू आंसरिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन दे सॉल्व तुम्हें ही करना है, ऐसे नहीं स्टार्ट हो गए तुरंत कि दिस 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 दिस. इवन इफ यू हर्ड द क्वेश्चन अ मिलियन टाइम्स, इवन इफ इट इज लाइक कि एक लिंक लिस्ट को ज्वाइन कर दो या मर्ज कर दो 2 लिंक लिस्ट को, हम 1000 बार क्वेश्चन देखा है, तब भी लिसन टू द इंटरव्यूअर कि उसने कुछ ट्वीक तो नहीं किया, कुछ उसने घुमाया तो नहीं, या उसको क्या चाहिए इस आंसर से. लिसन टू अंडरस्टैंड, दैट इज एल. नाउ ए, आस्क योर डाउट्स. इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, जो भी डाउट्स हैं सब पूछ लो. आस्क्ड हिम कि इसमें ये वाला केस कैसे होगा, वो वाला केस कैसे होगा, या फिर इसमें ऐसा सिनारियो भी है क्या, हम इसमें सपोज कुछ एरे का क्वेश्चन है कि इसमें एरे में इज इट अ स्ट्रिंग्स एरे, इज एन इंटीजर एरे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है पूछो. ठीक है, एंड डोंट रिफ्रेन फ्रॉम, आई वुड से, हेजिटेटिंग कि यार ये पूछ लूंगा तो उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये बहुत पूछ रहा है. नो, नेवर. जो भी डाउट है क्वेश्चन रिलेटेड सारे पूछ लो, जिससे कुछ भी मिस ना हो. और इफ यू आस्क समथिंग एंड वो इंटरव्यूअर को दिखता है कि हाँ ही इज थिंकिंग, कि इसके दिमाग में ये वाला पॉइंट भी आया, तो दैट रियली शोज योर एनालिटिकल स्किल्स. सो दैट इज फॉर ए, आस्क योर डाउट्स. नाउ फॉर टी, थिंक आउट लाउड. सो जो भी दिमाग में चल रहा है सब जबान पे होना चाहिए. Just whatever you're thinking, just say it, because interviewer is not going to go inside your brain and see कि क्या चल रहा है. Whatever you're thinking, either type it and say it. टाइप करते करते लिख लो, या फिर पहले बोलो फिर टाइप करो. जो भी है कम्युनिकेट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो. E, now this was T, then E is for edge cases. So हमेशा इंटरव्यूअर्स हमेशा ये देखते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लेते हैं, बट जो एज केसेस हैं जहाँ पे प्रोडक्शन में जाके कोड फटते हैं, बेसिकली अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तुम्हारी कंपनी में, वो दे हायर यू एंड देन तुम कोई एज केस मिस कर दो, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिनारियो प्रोडक्शन में जाके इट गोज बॉन्कर्स, मतलब फट गया कोड वहाँ पे. तो दिस इज वेयर दे चेक कि भाई
कोई एज केस मिस नहीं होना चाहिए. तो यू हैव टू टेक स्पेशली कॉल इट आउट इंटरव्यू में कि these are the edge cases that I have covered and this is how I've covered it. So it shows कि इसको सब कुछ पता है इस प्रॉब्लम के बारे में या इस सोल्यूशन के बारे में या इसने इस तरह से अप्रोच किया है. So that is E for edge cases. Now last is R. So you have to give refined answers for your resume. It is your resume. You must know what you have done. You cannot stutter at that point and you don't have to like think there and then. So whatever is asked from your resume, make sure to have refined answers on that. ठीक है, वो पहले से ही प्रिपेयर किया. अच्छा इसमें पूछेंगे तो मुझे ये बताना है, इस प्रोजेक्ट का पूछेंगे तो ये बताना है, या फिर इस एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे तो ये बताना है. Because if you don't have that ready, it doesn't look original and it also wastes time. क्योंकि 45 मिनट का इंटरव्यू है. अगर तुम शुरू के 10 मिनट वो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली, अगर तुम उसमें ज़्यादा टाइम ले गए, तुमने रिफाइंड आंसर्स नहीं दिए, तो फिर उनको लगेगा एक तो तुम्हारा कोडिंग टाइम कम हो जाएगा. ठीक है, और फिर उसके बाद उनको भी लगेगा वेदर ही और शी इज कॉम्पिटेंट इनफ जो उसने रेज्यूमे में लिखा है और नॉट. टू हैव रिफाइंड आंसर्स फॉर रेज्यूमे. सो लेटर इज द कोड. सो दैट इज द strategy. So basically, resume answers are very important. You have to know about your resume. Isn't that कि आप कुछ भी झूठ उसमें लिख दो and then you got some time stuck in the interview और वो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ा एक माइनस पॉइंट होता है. मतलब झूठ लिख भी दो कोई बात नहीं, बट झूठ को जस्टिफाई करना आना चाहिए. झूठ जस्टिफाइड झूठ तो कोई बात नहीं चलेगा. But you don't, so try not to lie about it because interviewers are smart. They can read through you. Whatever answer you give, it shows that कितना genuine है, या फिर इसने actually उस पे काम किया है या फिर क्या है मतलब. So they are smart and it shows. तो एक झूठ बोलो तो justify करो, नहीं तो सच बोल दो. And college में they don't expect कि तुमने वहाँ तोड़ू project बनाया होगा. What they are looking for is your thinking skills, your analytical skills, and how deep can you think. I think this is going long. This is going to be long because our Okay. audience is very excited. Questions are coming in the comments. Yeah, no worries. Ma'am, next our next question is कि can you share some valuable insight? Oh, this is I think this is done. Yeah. Experience at Make My Trip and specific projects or challenges the worked on. Okay. So MakeMyTrip was my first company. So I joined in COVID and it was work from home. So it was really new for me. And I think COVID was new for everyone. So that was coupled with that. So MakeMyTrip, I worked in as an iOS developer and I was in the hotels division. And COVID, there was this I would say upstream of the alternate accommodations, or you say staycations or B&Bs, such properties which are not hotels. So I was there in the iOS development of that. So on the front end, we created an icon. If you see alternate accommodations करके या staycations करके, where there are such houses which are rented. So उसका पूरा UI is what I created, and the project was, I would say, very interesting and very relevant also because COVID ke time pe nobody was staying in hotels because of the situation. Everyone preferred staycation कि वहाँ पे अलग से कोई प्रॉपर्टी हो, सैनिटाइज्ड हो, वहाँ पे रह सकते हैं. तो दैट वाज रियली आई वुड से fun to work on, and iOS was something which I hadn't done in college. तो मैंने स्क्रैच से एक न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करी, इम्प्लीमेंट करी, एग्जीक्यूट करी, और उसमें अगेन जो मेंटर्स असाइन हुए थे उनका बहुत बड़ा हेल्प होता है. एंड माई टिप टू यू गाइज इज, जब भी पहुंच जाओगे पहली कंपनी में, बहुत सारे सवाल होंगे, सब पूछ लो. जो भी पूछते रहोगे सबका आंसर मिलेगा. नहीं पूछोगे आप स्टक होगे तो फिर दिक्कत आएगी. बट पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, एवरी वन विल बी हैप्पी टू आंसर. ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं इतना भी नहीं आता, ऐसे कोई नहीं बोलेगा. तो ऐसा सोच के कभी कुछ मत, मतलब ऐसा मत सोचना कि हम नहीं पूछते, चलो ये जो भी मन में आए पूछ लो. दैट रियली हेल्प्स. तो मेक माई ट्रिप में भी
iOS बिल्कुल न्यू था, तब भी मैंने पूछ पूछ के सीख सीख के सीनियर से हेल्प लेके कर करके उसको चला लिया. So that would be make my trip experience. Nice. So there is a question coming from the comments, ma'am, that this is a different kind of question. Interviewer को तो पैसा मिलता है ना हायर करने का. Why don't they just let it slide? नहीं, no interviewer gets paisa for this. When I was I in think Make My Trip, interviewer gets passive for work of the company. They have to deliver good stuff to the company, right? they interviewers are usually software developers only, like me. So when I was in Microsoft, when I was in Make My Trip, I took 2-3 interviews. तो जो हमारी iOS की टीम थी उसमें से ही senior leads first round was taken experience wise, first round was taken by me, second round was taken by seniors, third round was taken by super seniors. This is how it goes. तो और कोई अलग से पैसे नहीं मिलते हैं, वो बस तुम्हारी कोडिंग एबिलिटीज चेक करते हैं. तो इंटरव्यूअर्स आर नॉट पेड, क्योंकि वो कंपनी से ही होते हैं. इट इज इन आर डिलीवरेबल्स. और जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, इट इज आर डिलीवरेबल्स की हायर करना इज हायरिंग टैलेंट इज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उसी मैनेजर को उस एम्प्लॉय से काम कराना है. So he should be aware that how are his skills, how is his coding ability. So they are not paid for it, so they can't let it slide. उनकी टीम में कोई गलत बंदा आ गया तो फिर उनको ही बाद में सफर करना पड़ेगा, राइट? सो दे मेक श्योर कि हाँ, हाउ डस दैट कैंडिडेट फिट इनटू आवर टीम, और हाउ विल ही और शी बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू आवर टीम इन अ पॉजिटिव वे, कि इसको आने से हमें क्या फ़ायदा है. एंड तुम्हें भी ऐसे सोचना चाहिए कि हमें वहाँ जाके क्या फ़ायदा है. तो ऑलवेज थिंक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. So, ma'am, my next question from you is कि what are your experiences and contributions when you are SDE at Make My Trip and when you are SDE at now Microsoft? What are your experiences and contributions there? Okay. So, in Make My Trip, I was an iOS developer, but when I switched to Microsoft, it was a full stack role. So, I had never learned, never worked in backend majorly. क्योंकि iOS तो it's entirely front end. अब backend में I got to learn from the very beginning कि APIs कैसे बनाते हैं, and how to make it scalable, कि कल को 10 लाख या 1 करोड़ लोग यूज करें तो क्रैश नहीं होनी चाहिए. तो दैट इज द लर्निंग इन माइक्रोसॉफ्ट. और फुल स्टैक में अभी आई एम लर्निंग रिएक्ट ऑल्सो. तो रिएक्ट पहले मैंने करी नहीं थी, बट धीरे धीरे सी शार्प भी. सी शार्प वॉज रिलेटिवली ईजी, सो द टेक स्टैक चेंज फ्रॉम मी फ्रॉम मेक माई ट्रिप टू माइक्रोसॉफ्ट. तो फ्रॉम iOS फुल स्टैक हो गया. फुल स्टैक में भी बैक एंड, फ्रंट एंड और अजोर का पूरा सिस्टम, वो भी सब कुछ इंक्लूड हो गया. सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, कल्चर वाइज भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों कंपनीज में. वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो. टेक्नोलॉजी वाइज, हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज मेजरली तो यही था. बाकी नथिंग इज कमिंग टू माई माइंड एज सच. Okay. बट ये कि लर्निंग हर जगह थी, तो आई डिड नॉट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू iOS. तो आई वाज लाइक फुल स्टैक करेंगे तो सब कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रंट एंड बैक एंड. क्योंकि iOS में मुझे बैक एंड का पता ही नहीं था. बस हमें पता था कि हाँ, एपीआई चल रही है, हमें बुलानी है और हमारे पास आ जाएगा डेटा. बट देन जब एपीआई लिखी तो और अच्छे से पता चला, ओ ऐसे चलता है, ऐसे काम करते हैं. तो इट वाज इवन मोर फन. Okay. So, ma'am, as you said that we'll talk on this later, that what are the differences between working environment. So my next question is the same. अच्छा, ओके. Yes, that what are the differences between your current role and previous role and working environment? Okay. Make My Trip was very fast paced. I loved working there because you could see it was the projects थे वो बहुत relevant to me थे. मतलब in the sense कि you are using Make My Trip to book your flight, book your hotels, and you're also developing it. So there was an added, proudness feeling to it, that okay, yeah, this is what I created, this is what I developed. And it is very, I would say, because we had used to have sprints, so every 2 weeks there was a release.
So every 2 weeks, something new was going into production, something new in the app, something new in the APIs. So it was very fast. Microsoft is really fun as well. They have a very good cultural aspect in the sense that um, they have very, I would say, they have very fulfilled projects. Like they have a very, I would say, timelines कि हाँ इस time पे ये होगा, इस time पे ये होगा, इस time पे ये होगा, and then they have the entire timeline set for them, and उसके हिसाब से they work, and they try. Microsoft में work life balance is good, so they won't make you work on weekends. They plan according to your leaves, they according to your capacity, according to your bandwidth. उसके हिसाब से they assign the work to you, and then you finish it, and then you can ask for more if time is remaining in that sprint. So this is what I felt majorly. Impact तो Microsoft के काम का भी बहुत ज़्यादा है. So whatever we do, we see that okay, this is the impact that we are creating, and that helps you move forward. So ऐसा था, but it is not as fast paced. So yeah. From your make my trip experiences, it is good that you are creating that thing and you're using that thing for your use also. So हाँ. that is a good thing. मन में होता है कि वो चीज अच्छी कि यार मैं ही बना रहा हूँ इसको और मेरी हाँ बनाई हुई चीज बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी, exactly. या. So moving on to next question. Your opinion about essential and non no sorry essential technical and non-technical skills that an SDE should have to land in the industry. Hmm. टेक्निकल स्किल्स, आई थिंक एक लैंग्वेज पे बहुत स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए. वन लैंग्वेज ओनली, बट बहुत स्ट्रांग कि मतलब ये तो इसमें से तुम्हें कुछ भी पूछ लो तुम्हें आना चाहिए. इट कुड बी C++, इट कुड बी जावा, इट कुड बी पाइथन, और इट कुड बी एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. यूजुअली टॉप 3 में यही 3 होती हैं, बट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इट. बाकी जितने भी, सपोज जिस भी कंपनी में तुम जाते हो, तुम्हें कोई भी टेक स्टैक मिलता है, सबका बाप तो यही तीनों है. सो इफ यू नो देम, और इफ यू नो एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो यू आर सॉर्टेड. Because majorly when the language changes, only the syntax changes. Rest of the basic logic remains the same, or the concepts remain the same. तो बस सिंटेक्स चेंज होता है, लॉजिक तो वही रहेगा. तो हैव वन स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर वन लैंग्वेज. दिस इज टेक्निकल एस्पेक्ट. सॉफ्ट स्किल्स एस्पेक्ट में, योर एबिलिटी टू प्रेजेंट योर थॉट्स, दैट इज रियली important. Your ability to communicate, your ability to have conversations with the manager, that is also very important. तो ये तीन चीज़ें हैं आई वुड से. इसमें जो फर्स्ट थिंग, प्रेजेंट योर थॉट्स. सपोज यू हैव वर्कड ऑन, चलो मेक माई ट्रिप ही ले लेते हैं. मेक माई ट्रिप में आई मेड दैट स्टेकेशंस वाला. Now there are certain forums or certain sessions that you can set up within your own team, that this is what I've created, this is this is the technology, this is the logic that I use, this is the, I would say, this is the Figma, this is the design that was given to me, and this is how I proceeded. So if you present it really well, it shows to the manager, it shows to the team that you have contributed. So you should know how to present your thoughts. Second, communication is important. कि सामने वाला कोई हेल्प के लिए आ रहा है, यू शुड बी एबल टू हेल्प. आप अपनी तरफ से बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करो, एंड यू आस्क डाउट्स, यू प्रोवाइड हेल्प. सो और जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आप कम्युनिकेट करो कि हाँ, सपोज कोई स्टोरी दी है, कोई टास्क दिया है, और उसमें कोई ब्लॉकर आ गया. इफ़ यू डोंट टेल दैट ब्लॉकर ना, लोगों को लगेगा कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ. तो इट इज़ एसेंशियल टू कम्युनिकेट कि दिस इज़ द ब्लॉकर, इस वजह से रुका हुआ है. सो द पर्सन और द सीनियर माइट हेल्प यू ऑल्सो कि अच्छा इसको ऐसे कर लो तो हो जाएगा. So this is how you advance in corporate. And third thing, communications with manager. Always keep Ma'am, can you hear me?
Yes, I I can think hear you there's now. some There was sort a of power. network. Yes, Okay, yes, okay. No power worries. cut at my place. No Yeah. worries, no worries. Yeah. So, yeah, as I was saying, the third important thing is communicating with your manager. So, no matter what you do, keep your manager in the loop. कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, and set up bi-weekly one-on-ones. जिसमें सिर्फ मैनेजर और तुम हो, एंड जस्ट वट एवर कॉन्वर्सेशन यू वांट टू हैव विद हिम, बताओ कि ये चल रहा है, ये मेरे प्लान्स हैं, डिस्कस योर करियर एस्पिरेशंस विद हिम कि हाँ दिस इज़ व्हाट माय करियर पाथ शुड लुक लाइक, कि मुझे 2 साल में SDE 2 बनना है और मुझे ये प्रोजेक्ट करने हैं, या फिर दिस इज़ द टेक स्टैक दैट आई वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन. तो ही विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दैट अपॉर्चुनिटी. इफ यू से आई वांट टू लर्न रिएक्ट या मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है, he will find that kind of project or task and give it to you. So this is how it goes. Though in office also there is manager and employee communication is very crucial, basically. Yes, yes. And So, maybe manager should be a confidant, there to help you. So no worries, कुछ भी उनसे बात करो. Be very honest with the manager. okay. That is what. Ma'am, anything resource material or books that you suggest for the upcoming developers to the SDs, those who want to get into the industry? वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन है, बट आई लव द बुक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बाय नरसिम्हा करुमांची. He has a lot of books. I think one is on Java as well. So Narasimha Karumanchi is the best author that I could find in terms of books. So whenever I used to get stuck, or in the very initial days जब मैंने start किया था prepare करना third year में, so I refer to the Narasimha Karumanchi book. बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ बहुत बेसिक से एक्सप्लेन कर रखा है, तो काफ़ी अच्छी है. और उसमें इजी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, तो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज दैट. एंड सेकंड इज फॉर सिस्टम डिज़ाइन, आई थिंक गौरव सेन यूट्यूब बेस्ट रिसोर्स. सो एंड यूट्यूब में बहुत सारे होते हैं ब्लॉगर्स आजकल, तो सब लोग ही कोडिंग सिखा रहे हैं, बट यू शुड नो टू हाउ टू फिल्टर एंड विच वन टू फॉलो. सो उसका एक बार सीनियर्स से बात करना कि उन्होंने किस किस को फॉलो किया था. फॉर सिस्टम डिज़ाइन आई फॉलोड गौरव सेन अलॉट, तो उन काफ़ी मुझे हेल्प हुई थी इंटरव्यूज़ में विद दैट. और यूट्यूब को अच्छे से लेवरेज करो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, देयर इज कोर्सेरा, देयर इज कोड कोड आई थिंक यूडेमी, बहुत सारे हैं, उनको लेवरेज करो. फ्री कोर्सेज, फ्री ही इतना सारा मटेरियल है कि तुम्हें पेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल. सो दैट इज़ फाइन. Let me know if I'm YouTube audible has a correctly. Sorry? I'm saying मैम YouTube has a huge base of the skills and teachers. आजकल तो सभी YouTube पे सब चीज़ ही पढ़ा रहे हैं. Even I But also you should prepare. know कि किससे क्या पढ़ना है. क्योंकि हाँ, that is the main thing. हाँ, Even I also prepare for my exams through YouTube because in college हाँ, हाँ. So I think maximum then, uh, I think there is an issue I with your think lag network. आ रहा है थोड़ा सा. Yes, yes. हाँ, let me change it. Give me a second. I'll change my Wi-Fi. Oh, okay, ma'am. I've switched it. Is it better now? Yeah, ma'am. It is better. हाँ. So we So are I was talking. saying एक subject था डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो उसका तो सारा यूट्यूब से ही पढ़ा था, और टीचर्स भी यूट्यूब से पढ़ के हमें पढ़ाते थे. तो इट वाज फनी, बट इट वाज हाउ इट वाज. Yeah. एंड देयर इज वन मोर रिसोर्स आई थिंक, अगर NLP या AI में कुछ पढ़ना है, तो एंड्रयू NG के फ्री कोर्सेज हैं. दोज आर वेरी गुड. सो NLP बाय एंड्रयू NG, मस्ट डू. So, ma'am, how do you
stay updated with the new tech stack and emerging technologies? What is your resource that from which you are get updated about the new technologies? I think I'm a very people's person, so I just talk a lot. I love talking to people. So office may we keep that conversation going. So whoever is sitting on my side, I'll just be like, hey, what's new? What's coming? What are they working on? And उससे ही काफी कुछ सीखने को मिल जाता है. That okay, working on this, what's new? So जो भी advances होते हैं, बाकी blogs are obviously there. There's no particular blog that I follow, but I like Medium as a platform कि वहाँ पे बहुत लोग पोस्ट डालते हैं on various things. Medium is something I go to for all this. Okay. How do you balance technical skills with soft skills in your role? So how do you So in maintain the balance between the things? yes, so in my role, we have rotations in sprint planning. So sprint is of 2 weeks. So whatever tasks are there in 2 weeks, who will get us, who will be doing what project will be assigned to him. Not everything is under my control, but I am given that opportunity that you can plan it out. That so we have rotations of I would say 2 sprints, so 4 weeks. So for 4 weeks I have control that okay, this person is going to complete this task in this much time. So this is how we plan, or towards the managing side, मतलब management वाला aspect आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा. And how do you deliver और इसको. And there are several sessions like bug bash हो गया, जो भी हमने डेवलप करा है उसमें जो भी bugs हैं वो कब कब उसकी एक मीटिंग सेट करना. देन नॉलेज शेयरिंग, जो भी आपने डेवलप किया उसको प्रेजेंट करना. सो दिस इज हाउ यू कीप अ बैलेंस. कि टेक्निकल तो आप काम कर ही रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स का आपको साथ में लेके चलना है और उसको भी आई वुड से प्रेजेंट करना है लोगों को. सो सॉफ्ट स्किल्स वहाँ पर हेल्प करता है. दिस इज हाउ आई एम बैलेंसिंग इट. एंड देर आर वेरी कल्चरल कुछ कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे वी हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. एंड देर इज माइक्रोसॉफ्ट में देर इज अ गिव कैंपेन विच इज़ चैरिटी डोनेशंस, और उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सो पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू गिव विजिबिलिटी, and it helps you make friends and bond with the people in office. Yeah. So moving to our next question, what advice do you give to aspiring SDEs who are just starting their journey in the field, especially in terms of mindset, skill development, and career planning? This is a nice Broad question. question, Yeah. yes, and very relevant. So I would say, so I think mostly everyone is a college student here. So my major tips to them will be that look out for opportunities outside of your college as well. Participate in hackathons is number one. सब में रजिस्टर कर दो, सब में अप्लाई कर दो. And make your teams in college. Have 2-3 friends या 4-5 friends और a group जिसमें तुम बैठ के साथ में प्रोजेक्ट्स करो, डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स सोचो, सॉल्यूशंस निकालो. बिकॉज दैट इज़ फन एंड एंगेजिंग एंड मतलब मज़ा आएगा और उससे आउट बहुत अच्छा आउटपुट भी निकल के आता है. सेकेंड, पार्टिसिपेट इन all these are a lot of forums. Just say there's Google Summer of Code, there is RGSOC, which is Rails Girls Summer of Code, that is specially for girls. Then there is Learn IT Girl, there is Grace Hopper Celebration, GHC. Then there's Hacktober Fest, which GitHub organizes. I'm not sure Currently if it's going on. currently going on. So go for Hacktober Fest. Hacktober Fest will give you an insight into how to go into open source contributions. So participate in all these things. This is second. Third is look out for the programs which offer internships. For example, there's Microsoft Engage program. There is a step intern program from Google. So this is second year, third year में ही इसके applications आते हैं. Usually what companies like Microsoft and Google do, they don't go for on campus that much, because they it's not physically possible for them to go to each and every college in India. So what they do is they have forums like this open so that anyone has an equal chance. So you just participate in that.
एंड कीप अ लुक एट द डेडलाइंस, द टाइमलाइंस। अभी चेक कर लो जाके इस कॉल के बाद, जस्ट गो एंड लुक एट इट कि कौन कौन से टाइम्स पे कौन कौन सी इंगेज प्रोग्राम्स स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं, एंड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। एंड इसमें अप्लाई करने से आगे का पाथ बहुत क्लियर हो जाता है। इफ़ यू एस इट, जैसे लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, दिस ईयर वी हैड 4-5 इंटर्न्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पूरा जो हमारी 4-5 टीम्स हैं, उसमें हर टीम में एक एक इंटर्न आया था। दैट वाज थ्रू स्टेप, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम। तो उसमें देवर सेकेंड थर्ड ईयर में ही वो लोग सेलेक्ट हो गए थे, देन दे गॉट इंटर्नशिप्स एंड देन दे ऑल्सो हैव अ चांस फॉर पीपीओ, विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। सो व्हाट टेक जाइंट्स आर डूइंग कि वो इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहे हैं और फिर पीपीओ दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हायरिंग देम एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। दिस इज द ट्रेंड। सो इंटर्नशिप्स के लिए हमेशा ओपन रखो। इंटर्नशिप्स रेफरल्स के थ्रू थोड़ी कम मिलती हैं, बिकॉज यूजुअली कंपनीज में ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप्स आर नॉट प्रोवाइडेड वाया रेफरल्स। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, कीप एन आई आउट फॉर दैट। थर्ड थिंग इज, कभी ऐसा मत सोचना कि यार आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, क्योंकि प्रेपरेशन इज अ नेवर एंडिंग थिंग, कभी खत्म ही नहीं होगी, करते रहो करते रहो। देर विल बी अनदर 100 क्वेश्चन जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे, ना तुम्हें आते होंगे। तो तुम, सो नेवर फील दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो डो डो जब भी पढ़ रहे हो, साथ साथ में अप्लाई भी करो। इफ ऑन कैंपस है तो बहुत ही बढ़िया, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि ऑन कैंपस में इस टाइम से आ रही हैं तो उसके पहले अच्छे से पढ़ाई करो। ऑन कैंपस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो तुम्हारी प्लेट में तुम्हें जॉब देने आते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज कर लो। और अगर ऑन कैंपस का इतना नहीं है, ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है, तो पढ़ते भी रहो और अप्लाई भी करते रहो। ऐसा नहीं कि हम कि भाई पहले 4 महीने पढ़ाई करेंगे और फिर अप्लाई करना शुरू करेंगे, नेवर डू दैट। डू इट साइमल्टेनियसली। ये 2 घंटे पढ़ाई करी तो आधा घंटा निकाला लिंक्डइन पे अप्लाई करने के लिए। और रेफरल्स के थ्रू मिल रहा है तो और ही बढ़िया, क्योंकि रेफरल्स के थ्रू कॉल आना आसान होता है। इवन इफ यू लाइक ब्लाइंडली अप्लाई करने से बेटर होता है रेफरल्स के थ्रू। ऑलवेज गो फॉर रेफरल्स इफ यू कैन। और इसमें भी सीनियर्स और पीयर ग्रुप्स, इन सब की बहुत हेल्प आती है। सीनियर्स को पकड़ो, सर ऊबर का चाहिए रेफरल, सर गूगल का चाहिए, मेक माई ट्रिप का चाहिए, आरबीएस का चाहिए, जिसका भी चाहिए, सीनियर्स को पकड़ लो। एंड लिंक्डइन पर और क्या टिप्स हैं? लिंक्डइन पे हमेशा मेंशन द जॉब आईडी व्हाइल रेफरिंग, व्हाइल आस्किंग फॉर अ रेफरल, कि मुझे इस जॉब आईडी के लिए रेफरल चाहिए। क्योंकि बस ये बोल दो कि हेलो प्लीज गिव रेफरल, दिस इज माई रेज्यूमे। तो दैट अदर पर्सन माइट नॉट बी लाइक कौन है ये, क्यों दूं मैं। तो उसको जॉब आईडी दोगे ना, तो उसके लिए भी आसान है कि वो बस वो लिंक पे क्लिक करेगा, जाएगा, अप्लाई रेफर कर देगा और हो जाएगा। तो लिंक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जॉब आईडी का। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। बाकी और क्या, लेट मी थिंक, और कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही। आई थिंक दिस इज मेजरली इट। So, और ma'am, we are having. प्रोजेक्ट्स Yeah. का एक बार मैं बता देती हूँ। प्रोजेक्ट्स का ये है कि जो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखे हैं ना, चाहे वो 2 या 3 ही हो, बट वो अच्छे से पता होने चाहिए। एंड इंटरव्यूअर्स कॉलेज स्टूडेंट से दे डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ होगा, बट जितना होगा वो उनको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। और हैकाथॉन में जाओ, एक रात में प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट को ही रेज्यूमे में लिख दो। दैट इज व्हाट आई That is a डिड। good thing. Yeah. हाँ, मतलब वेब टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा पहले कर लो, जो भी टेक्नोलॉजी। और यू कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट। कॉलेज में सबसे आसान मुझे लगता है वेब डेवलपमेंट होता है। वेब डेवलपमेंट कर लो। आई डिड जैंगो। तो जैंगो में पूरा पाइथन, एक तो पाइथन से लिंक्ड है, मुझे पाइथन वैसे ही पसंद आ गई थी 11th 12th में, तो उसी में मैंने जैंगो शुरू कर दिया था। तो पिक एनी वन थिंग और उसको हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बना के रेज्यूमे में डाल के खत्म। दिस इज़ द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा टाइम भी इस पे एंगेज नहीं करना, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो शुरू के 5-10 मिनट का ही टाइम होता है बस। और रेज्यूमे 40 मिनट में जो आप आंसर देते हो, जो आप सॉल्व करते हो, उससे ही आपका इंटरव्यू मेक या ब्रेक होता है। दैट इज़ द थिंग। So, ma'am, that you are saying कि in college placements, interviewer doesn't expect
वेरी मच हायर थिंग फ्रॉम यू दैट दे वांट कि जो आपके पास है, जो आपने किया है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो. So some people thought कि in college placement the interview came with the mindset that they are expecting a very high knowledgeable person or very experienced person. So is No, this a myth? क्योंकि this आपकी is a बातों से myth, तो bhai. How can a मैं college person, how can a college person be experienced? How can a fresher be experienced? वो अपने प्रोजेक्ट्स में वो ये दिखा सकता है कि उसने क्या क्या सीखा, कौन कौन से टेक स्टैक्स को आते हैं. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव दैट. बट बेसिकली जो थिंकिंग एबिलिटी होती है ना, जो स्किल्स या फिर सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि एक क्वेश्चन आया सामने या कोई प्रॉब्लम आई, उसको कैसे सॉल्व कर रहा है बंदा, पीपल यूजुअली चेक दैट मोर. क्योंकि कल वेन एवर यू आर हायर्ड, तुम्हें वो क्वेश्चंस जो आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी चलेगी. दिस इज व्हाट दे टेस्ट मोस्ट यू ऑन, लाइक दिस इज व्हाट दे टेस्ट द मोस्ट. So ma'am, we are having a question from the comments that please give some tips for third year students. मेरे लिए भी. I am also a third year student. ओके. थर्ड ईयर में यार, अभी कोडिंग मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना तो चालू कर ही दो. दिन में 1-2 घंटे कर लो, वीकेंड्स पे थोड़े बढ़ा दो, 3-4 घंटे कर लो. कीप इट अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार मतलब गैप आ जाता है तो फिर वापस से थोड़ा सा रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो एक रिदम में रहेगा तो बेटर रहेगा. स्मॉल स्टेप्स विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग जर्नी. ठीक है, बाकी अप्लाई करते रहो ऑफ कैंपस. अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग, अप्लाई करते रहो साथ साथ में. रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अभी और टाइम चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू की डेट तुम्हें मिल जाएगी ना कि हाँ इस दिन मेरा इंटरव्यू है या इस दिन मेरा कोडिंग टेस्ट है, ऑटोमेटिकली मेरे साथ तो ये होता था, ऑटोमेटिकली 2 दिन पहले तुम और ज़्यादा पढ़ने लगते हो कि हाँ यार परसों इंटरव्यू है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं. तो योर लर्निंग ऑल्सो स्पीड्स अप. तो ये. और थर्ड ईयर में हैकाथॉन चले जाओ प्लीज़. और थर्ड ईयर में लॉट ऑफ ये जो मैंने बताए थे, आरजी सॉक, गूगल समर ऑफ कोड, ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन, और ये सारे स्कॉलरशिप्स भी SIH बहुत. is also one of them. सॉरी, SIH, स्मार्ट इंडिया SIH. हैकाथॉन. Yes. यस. हमारे बहुत सारे ग्रुप्स गए थे, मैं भी गई थी. वेरी गुड फोरम. उसमें भी अप्लाई करो, मस्ट गो है, बहुत मज़े आते हैं. बाहर भी जाने को मिलता है सिटी से. इट इज़ अ फन एक्सपीरियंस. Yeah. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. और कौन से, हाँ, थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी होती हैं. जैसे जर्मनी की देयर इज़ दिस डैड, DAAD, ये एक स्कॉलरशिप होती है विच इज़ एक्सक्लूसिवली ओपन टू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. तो रिसर्च करो, गो टू द इंटरनेट, फाइंड सच स्कॉलरशिप्स. क्योंकि थर्ड ईयर में ना इंटर्नशिप्स का बाहर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. उसका एप्लीकेशन प्रोसेस अपना अलग होता है, थोड़ा सा लंबा भी होता है, बट इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड, गो फॉर दैट. तो बाहर इंटर्नशिप करके आओ. अच्छा, स्कॉलरशिप बेस्ड होता है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, तुम्हारा पैसा नहीं लगता. एंड ऑल्सो अटेंड, if you're interested you can attend these fests also. जैसे GDG का होता है, गूगल डेवलपर फेस्ट, गूगल डेवलपर्स ग्रुप कराता है. ऐसे ही जो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं कहीं ना कहीं टेक के, उसमें पार्टिसिपेट करो. जैसे वुमेन इन टेक का भी होता है, एक वुमेन टेक मेकर्स है, WTM, उसके भी इवेंट्स होते हैं. उसमें भी जाओ कॉलेज के थ्रू. तो इट्स फन. There are lots of questions in comments. So one more it is. I can take a few more, I think. Yeah, Love Khandelwal. Can you tell how to get to the industry being in third year and that to from third year local college? How to contact in addition to LinkedIn? Okay. So if you're in third year and third year tier से फर्क नहीं पड़ता. As I mentioned, जो बड़े बड़े ये programs हैं, Microsoft Engage और Step, they don't look at the college. They look at, you apply for it, then they will assign a project to you. उस project को अच्छे से करोगे तो उस बेसिस पे दे सिलेक्ट यू. से दे डोंट लुक एट विच कॉलेज यू आर फ्रॉम. एंड कुछ चैलेंजेस भी होते हैं आई थिंक कोड फोर्सेस पे. कुछ कुछ ऐसे हायरिंग चैलेंजेस भी होते हैं.
उस पे भी जा सकते हो। उस पे जाकर सबके लिए ओपन होता है, कोई भी आ सकता है, कॉलेज कोई नहीं पढ़ता उस केस में, कॉलेज डज नॉट मैटर। और आजकल द ट्रेंड हैज चेंज्ड। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, हर को बस कोडिंग स्किल्स अपनी परफेक्ट रखो, कॉलेज नेम डज नॉट मैटर। और अगर तुम थर्ड ईयर में हो और इंटर्नशिप्स के लिए रीच आउट टू, अगर तुम्हारे सीनियर्स हैं तो वो रेफरल जल्दी देंगे। सीनियर्स के पास रेफरल्स लो, जैसे जैसे जॉब आईडी सर्च करो, जॉब आईडी निकालो और भेज दो कि सर रेफरल चाहिए, तुरंत तुरंत ये काम करो। और लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट्स रैंडमली, मतलब यू कैन जस्ट ऐड पीपल। और अगर किसी सीनियर को नहीं जानते, सपोज दैट अ कंपनी कॉल्ड, कोई भी कंपनी एक्स ले लो, एक्स कंपनी में तुम्हारा कोई सीनियर नहीं है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्क में से कोई नहीं है, कोई बात नहीं, उस कंपनी को सर्च करो लिंक्डइन पे, 10 लोग आ जाएंगे। सारे सबको रिक्वेस्ट भेज दो ऐड करने की, और सबको मैसेज भेज दो ड्राफ्ट करके, दैट हाई, दिस इज द जॉब आईडी, प्लीज गिव मी अ रेफरल फॉर दिस, गिव अ शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट कि आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, दिस इज माई एक्सपर्टीज, एंड कैन यू प्लीज प्रोवाइड अ रेफरल, अटैच योर रेज्यूमे, और भेज दो। 10 में से एक तो कोई देखेगा ना, और उन्होंने भी नहीं देखा तो और 10 लोगों को भेज दो उसी कंपनी से। जो भी देखेगा कोई ना एक तो आपको रेफर कर ही देगा, क्योंकि रेफरल देने के पैसे मिलते हैं। रेफरल से जो सिलेक्ट हो जाता है तो जो रेफरल देता है उसको पैसे मिलते हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कैंडिडेट्स। तो इंटरव्यूअर को नहीं मिलते बट रेफरल देने वाले को पैसे मिलते हैं। तो लेवरेज दिस। और थर्ड ईयर के लिए और कोई टिप, आई थिंक दिस इज मोस्टली इट, कोडिंग चालू रखो रोज एक एक घंटा। So, ma'am, what are the some common misconceptions or challenges that aspiring SDs might face, and how they can overcome these obstacles to achieve their goals? मिसकंसेप्शंस, लेट मी थिंक। एक तो वही है कि वी आर नॉट रेडी इनफ, तो यू आर रेडी, जस्ट अप्लाई। दूसरा ये है कि आई थिंक, लेट मी थिंक, मिसकंसेप्शन है, तुम पूछो कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा होता है, मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा जो तुम्हें So, लगता हो कि so मेरे को। then there is a question हम्म। that what matters more, DSA or skills? I think DSA is also a skill. हाँ वही, दैट इज व्हाट आई आल्सो थॉट, डीएसए इज अ स्किल। I तो think love is thinking that DSA is a subject डीएसए, हाँ, and skills are different. मे बी ही मीन्स डीएसए और सॉफ्ट स्किल्स, आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे गो हैंड इन हैंड। क्योंकि देयर वाज अ, ओके, मेरे कॉलेज में एक बहुत प्रो कोडर था, बहुत ही प्रो, मतलब हमें लग रहा था कि पहले दिन इसकी प्लेसमेंट लग जाएगी। But what used to happen, he was in top 10 in every on campus placement का जो भी कंपनी आ रही थी। तो he was getting shortlisted for every interview, he was cracking every technical interview, but HR round में जाके he used to not go ahead, क्योंकि I don't know if he could answer well or if he just really could not answer। तो वो सारे टेक्निकल राउंड्स तो एस कर रहा था, बट लास्ट में जो एक एचआर राउंड होता है उसमें वो बार बार गड़बड़ कर दे रहा था। एंड वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बढ़िया कोडर है, इसका कैसे नहीं हो रहा। तो मेक श्योर दैट यू, अब जैसे मॉक इंटरव्यू है ना, वो तुम एचआर टाइप के क्वेश्चंस का भी प्रिपेयर कर लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल ही, अपना टेक्निकल तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, दैट इज अ प्री रिक्विजिट। जो पोस्ट रिक्विजिट है कि एचआर वाले राउंड में भी अच्छे से करना, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी, जो भी, व्हाट डू यू नो अबाउट, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, यू शुड हैव आंसर्स रेडी फॉर दैट। और डेटा स्ट्रक्चर्स और स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, सॉफ्ट स्किल्स, मतलब एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। तुम कितने अच्छे कोडर हो, जब तक तुम बताओगे नहीं कि इन्होंने क्या लिखा है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। या मैम बिल्कुल ये तो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है दैट इफ यू कांट एक्सप्रेस दैट व्हाट यू हैव लर्नड, तो ये आपके लिए इंटरव्यू में एक माइनस पॉइंट है बहुत बड़ा। हेलो, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू एट द अंशिमा साइड।
No worries, guys. So I think this question is for me, that what type of projects do you suggest to include your resume for web dev? Yeah, basically web dev projects are simple enough. You can make the Amazon clone, or you can make some management system, or sort of your personal portfolio types, or you can customer relationship manager, sorting visualizer, multiple game, student result management system. So from the on-campus interviews, as Anshima ma'am said, that they don't expect that you are having a very good project. That whatever you have made, you have knowledge of it. You should have knowledge of it. That's it. Okay. Am I right, बाकी ma'am? तो If या there बाकी is वेब डेवलपमेंट से कुछ प्रोजेक्ट्स हो तो वेल एंड गुड, यू कैन शोकेस देम. अगर कुछ सपोज आपने कोई एंड्रॉइड पे ऐप बनाई और आपने वो ऐप स्टोर पर डाल भी रखी है, वो भी दिखा दो. अगर बना रखी है तो दिखा दो, जो भी किया है सब दिखा दो, तो इट इज ऑलवेज बेटर. क्योंकि जो भी आपने किया वो आपकी स्किल को डिफाइन कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, आई थिंक. यस यस. So there is a question, ma'am, that is it necessary to complete the domain by end of graduation, or it is sufficient to have knowledge of subjects like OS, DBMS, like that? हाँ, तो इंटरव्यूज में ओ एस डी बी एम एस पूछते हैं. सो मेक श्योर ओ एस डी बी एम एस, हाँ, दीज टू सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और ऊप्स, दीज थ्री, ओ एस डी बी एम एस ऊप्स, ये तीनों से वो कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड उनके फेमस क्वेश्चन यही हैं कि डेडलॉक्स क्या होते हैं, डेडलॉक का एग्जाम्पल दो, या फिर फर्स्ट का वो एफ सी एफ एस क्या होता है, व्हाट इज फीफो, व्हाट इज First come, लीफो. first serve. हाँ. First in, और first out, last in, first यस out. That is the concept. यस Yeah. यस. और डीबीएमएस में ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, और उसमें आप व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज. सो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सबको आने चाहिए. और इतने आसान होते हैं ना, एक बार पता हो जाए तो आपको बस पता है, फिर आप ये फोड़ दोगे. मेक श्योर यू हैव इनफ नॉलेज ऑन दोज. ये तीन सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीएस में, ओ एस डी बी एम एस ऊप्स. इसको अच्छे से कटे ना. ऊप्स के भी देर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूअर्स जो इन पर्सन इंटरव्यूज में तो वो पूरा ऑब्जेक्ट को पूरा डायग्राम बनवा लेते हैं. तो कि कैसे कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से उसमें फंक्शंस होंगे. सो दे आस्क एवरीथिंग, क्योंकि दीज आर द सब्जेक्ट्स विच यू गाइज स्टडी इन कॉलेज. सो द इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये तुम्हारे ऑनगोइंग है, तो ये तो पता ही होने चाहिए. Yeah, ma'am. बल्कि मुझे तो So वो now, इंटरव्यूज आसान लगते हैं जिसमें डीएस, जिसमें ये सब क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये तो पता ही है, या आंसर करने थोड़े आसान होते हैं, तो प्रिपेयर देम. ma'am, now we are having some questions from our team, our community, and our team. So, what advice do you have someone interested in pursuing a career at Microsoft? I think this is a must ask question, because big giants में job के लिए how to go there. यार बिग जायंट्स में रेफरल के थ्रू ही जाना पड़ता है, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है. बिकॉज इफ़ यू अप्लाई ऑनलाइन, उनकी डेटाबेस में तुम्हारा रेज्यूमे तो चला जाएगा, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ देम. सो इफ इट इज़ नॉट स्टैंडिंग आउट, इट इज़ रियली हार्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम देम. सो बेटर टू हैव अ रेफरल. रेफरल में वो एक लेवल अप अपने आप हो जाता है. तो जायंट्स में दिस इज द थिंग. बाकी तो ऑल आई थिंक इफ यू हैव अ वेरी गुड लीड कोड प्रोफाइल, या आई वुड से गिटहब प्रोफाइल्स में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो ग्रीन ग्रीन है पूरा, तो दैट रियली शोज. तो उसको आई थिंक अच्छे से लेवरेज करना चाहिए. अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो लिंक डाल दो कि दिस इज माय लीड कोड प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल. तो दैट रियली हेल्प्स बिकॉज पीपल आर यूजुअली इम्प्रेस्ड बाय दैट. एंड एंड डोंट ट्रीट, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस यार बहुत हार्ड भी नहीं होता, बहुत इजी भी नहीं होता, मीडियम ही होता है. सो डोंट क्रिएट दिस, आई वुड से, an image that, oh, it's a giant, or it is going to be so hard, or something like that. It is treated like a normal interview, just for ऐसे कुछ माइंड में, because it's also psychological.
you might be a very good coder, but at the end of the day, if it's a Google interview, you might be like, dude, this is Google, this is gonna be so hard. I might not be able to solve it. What if the interviewer is too smart? What if he asks me something that I don't know? So don't go into that psyche. Just be confident. Don't treat a giant as a giant. You will be able to answer the questions. They don't hard ask too much or too hard, so it's fine. Some challenges or opportunities you have encountered working at a tech giant like Microsoft. Challenges, I would say, because टीम बहुत आई वुड से बड़ी या छोटी जितनी भी हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो वो रेलेवेंट हो और इम्पैक्टफुल हो. कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपको आई वुड से आपका काम डिमिनिश नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट. और अपॉर्चुनिटीज तो देयर आर इमेंस. मतलब जाइंट्स में, if I, let's say, I'm very passionate about sustainability, so if I want to do something in that aspect, there are a lot of forums, there are a lot of people who are already working in it. So it is very easy for me to just go say hi and just contribute there, or just have a discussion with them that okay, what is Microsoft doing in the sustainability aspect. So that is the opportunity, or it's open. So we have this culture called one Microsoft. So every, like, nobody is like, कोई demarcation नहीं है, कोई divisions नहीं है. Anyone can reach out to anyone in Microsoft कि this is what I'm thinking, this is what I want to do. So it's all open. And I think this work culture makes the big giants different from others. Makes a Yep. difference. So, ma'am, Microsoft is one of the reasons behind ChatGPT. So, how can we assure that if we get placed in your or any organization, will be enough productive? Yeah, productivity depends on the person and not on ChatGPT. So productivity is how well you manage your time, and how are you able to estimate the tasks that are given to you. And productivity में यार, just don't, I would say phones are the biggest क्या बोलते हैं, एनिमी. क्योंकि इंस्टा स्क्रॉल करने में तो भाई सबको मजे आते हैं, रील्स देख रहे हैं. Reels, तो yeah. ट्राई नॉट टू डू दैट. प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी. गो टू योर फोन सेटिंग्स एंड सी कि आप कितने टाइम कौन से ऐप को दे रहे हो. सो यू विल गेट एन आइडिया, ओके, आई हैव स्पेंड 3 hours on Instagram today, let me bring it down. So even I was as a developer, even as a college student, these are quite some distractions जो थोड़े से लिमिट करने पड़ेंगे. आई वुड नॉट से बंद कर दो, क्योंकि बंद नहीं कर सकते, ना करना भी नहीं चाहिए. बट लिमिट कर दो फॉर सम टाइम, अनलेस यू हैव अ गोल इन माइंड, और वो गोल कंप्लीट हो जाए देन यू कैन प्रॉब्ली इंक्रीज इट. और प्रोडक्टिविटी यार, चैट जीपीटी को कैसे लेवरेज कर सकते हैं इज लाइक, जहाँ भी, बिकॉज हम लोग टेक, फॉर टेक्निकल पीपल आई थिंक कोड तो हम लिख लेंगे, बट आई थिंक बहुत चैलेंज लोग को तब आता है जब उसको एक्सप्लेन करना पड़े, या फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े उस चीज़ की, या फिर टेस्ट केसेस वगैरह लिखना पड़े, या फिर जो भी टेक्सचुअल डेटा होता है ना, वो सारा फिर चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कि व्हाट आर दी, मतलब हाँ. और कुछ भी थियोरेटिकल, आई थिंक चैट जीपीटी हेल्प्स. कोड भी आई थिंक हेल्पफुल है, बट डोंट रिलाई ऑन इट एंड डोंट मेक इट अ हैबिट. प्रोडक्टिविटी कोडिंग वाइज तो तुम्हारे ऊपर खुद ही है, बट हाँ, चैट जीपीटी को तुम वैसे लेवरेज कर सकते हो जहाँ टेक्स्ट वाला डेटा हो. Ma'am, can you share your personal journey and experiences landing a job at Microsoft? So for me, actually, when I was planning for the switch from Make My Trip to Microsoft, I applied. I started applying. I think the entire process takes 3-4 months to learn, to make that decision. Okay, now I'm preparing. So preparation, office, and application सब साथ में चलता है. So if you devote 1 hour to coding, lead code, you have to devote half an hour to applications and applying and asking for referrals, going on LinkedIn. And I also maintained an Excel sheet that this is all where I've applied. So I can probably share that Excel also. That these are the companies that I applied, these are the job IDs.
these are the people that I've asked referral from. Did I get a referral or not? And then I had color coded it कि if I want to go or not, कि green for कि हाँ this is like the green companies कि मतलब go है मतलब Microsoft, Uber, Amazon, all of these. Then there were some startups also that I applied for, जिससे startups में even if I get selected or not selected, it's a very good practice. तो इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस भी हो रही थी. तो देर माइट बी सम स्टार्टअप्स दैट आई नेवर हर्ड ऑफ, बट उनके इंटरव्यूज देख के मेरी एक इंटरव्यू प्रैक्टिस हो जाती थी, तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड. तो मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया अपनी तरफ से कि इसका नहीं देना या सिर्फ इन्हीं कंपनीज का देना है. सबका दिया मैंने इंटरव्यू, और जो भी पहले क्रैक हो गया, फिर धीरे धीरे मैंने फ़िल्टर किया. सपोज़ मैंने आज बहुत सारे स्टार्टअप्स का दिया शुरू शुरू में, फिर प्रैक्टिस हो गई, लग रहा था कि हाँ भाई अब मैं सिर्फ अच्छी कंपनीज पे फोकस करूँगी और उनको प्रेफरेंस दूंगी. देन आई गिव स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू दोज. और माइक्रोसॉफ्ट में आई गॉट थ्रू इन अ रेफरल ओनली. माई फ्रेंड वॉज वर्किंग इन द टीम दैट आई एम करेंटली इन, and he was leaving, he was switching to some other company, so he gave me a referral. And usme there were five initially. There's an online round, usme they given easy to medium question, two questions, you have to answer them. It's a very basic, I would say, first line of the first test. तो उसके बाद there were four interviews. Yeah, four interviews, all of them technical. First was DSA, second was DSA and little bit of system design. Third was low level, I would say, low level design. Basically, objects, sorry, classes. What are the functions in that classes? So low level design का था. And fourth was a mix of everything. डीएसए का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फिर एक लो लेवल डिज़ाइन, लो लेवल ही था, राइट. So four rounds of this, and then fourth round was with the manager, जो hiring manager है जिनकी टीम में तुम जा रहे हो. That was very casual HR type round. So we are having a question in the comments. How come 15-year-old are getting jobs while we are following the traditional way to getting into college? Damn, I feel so old. I think 50 15-year-old is a white hat junior, I think. white hat junior type age. No, why do you need job? You can just sit in your room and enjoy. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक 5 15 year olds are getting such jobs. If they are, I'm not aware. And even if they are getting jobs, I don't think they have the experience which you gain in college. So traditionally college में जाते हो, you work with your peers, you work with teachers, you develop, you might also work in research projects. ये सब experiences उस 15 साल के बच्चे के पास And नहीं है, so moreover, you don't have much. moreover on the experiences, you doesn't have that kind of mindset. A 15-year-old यार बच्चा होता है obviously. 18 years में तो you are getting 12th pass, and how you हाँ. can think that a 15-year-old and you can get a job into big People giant. can learn to code, but not at a professional level. This is what college is, the transition between school. Like, School and college, yeah. Can you please tell how to look for an internship to get into the industry? I think we have I think answered we have this. answered. Yeah, We yeah. have we have answered. Yeah, these are the same questions pinging out in the comments. What is the future of Salesforce developer? Probably ask a Salesforce developer, but Salesforce usually is a very good company. One of, I think, two, three of my very close friends are working there, and the work life balance is great. So they have longer sprints. I think there are like 1 month sprint, so you have 1 month time to cover a piece of work, and so you can plan accordingly. You can plan according to your days and how much time you want to finish, how much task you want to finish when. So you have more flexibility, and they have a lot of perks also. So Salesforce में benefits बहुत होते हैं. So the thing about big giants is you get fitness reimbursements, you get wellness days off. So, and development wise, I think Salesforce made a lot of opportunities coming in. I think a Salesforce developer will be better, be able to answer the technical aspects of it.
And by if yeah, and if by Salesforce you mean the technologies which are being used in Salesforce, I'm not aware about that. फ्रंट एंड में एच टी एम एल सी एस एस जे एस और बूटस्ट्रैप, बैक एंड में बेसिक पी एच पी एस क्यू एल की पढ़ाई की, क्या इतना फर्क है टू बी फुल स्टैक? या इट्स इनफ. एंड एनीवे इफ यू आर जॉइनिंग एज अ फ्रेशर ना, जो भी तुम्हारा पहले से तुम्हें आता है इट ऑलवेज हेल्प्स यू. बट वहाँ जाके जो तुम्हें प्रोजेक्ट असाइन होता है, इट माइट और माइट नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड विद एच टी एम एल सी एस एस, बट दीज आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज. और ये तुम्हें आती है तो बहुत ही अमेजिंग, आगे हेल्प ही करेगा. एंड इतना काफ़ी है, मे बी नॉट, बट ज़रूरी है. काफ़ी नहीं है बट ज़रूरी है. सो ऑल द बेस्ट. हाँ. What is around 11 to 12 general Python was about? 11 ट्वेल्थ में बिकॉज मेरा सब्जेक्ट सी एस था एज माई ऑप्शनल, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स काफ़ी करे थे पाइथन में. एक तो एक हमें एंड में ही प्रोजेक्ट बनाना होता है विच गोज इनटू द बोर्ड्स, और फिर वो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी यूज़ होता है. तो वहाँ प्रोजेक्ट बनाया था. और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई थी तो कॉलेज में सब लोग सी पढ़ाते हैं सबसे पहले. फर्स्ट सेमेस्टर इज सी सी प्लस प्लस. सो आई रियली स्ट्रगल्ड बिकॉज पाइथन इज वेरी इजी. सी प्लस प्लस में इवन टू प्रिंट समथिंग यू हैव लाइक 2-3 लाइन्स ऑफ कोड. तो दैट वाज अ स्ट्रगल. बट आई थिंक लेट अस सी जो बुक है, या फिर लेट अस सी प्लस प्लस, बेसिक बुक है बट बहुत हेल्प किया. तो उससे मैंने स्टार्ट किया एंड ग्रेजुअली थिंग्स. Jyotishman Das is asking, I am first year student and I started both C and C++. So what is the roadmap I should follow to completely master it? C plus plus. So C is a little. I would not recommend that you deep dive into C, but C plus plus is the way to go. Use C plus plus for solving questions. The more questions you solve, the better you become at it. So it's just a matter of practice. Advanced tech, what should I learn next? Okay, so ma'am, we are having a question from Chelsea Jan. I'm in third year of college and having basic programming skills like C, C++, and MERN stack. What I should learn next? I think MERN stack is a very good skill. Mongo, That Express, React, and Node. I don't think you need to do anything from a stack perspective. Just focus on your code, your lead code, and your coding profile, and practice more on solving questions in less time. Because your, I think, technical skills wise, your profile is complete. How many Um, lead code questions do you recommend? there is no set number, I think, but at least you should do 1 or 2 questions every day. Instead of doing 10 in one day, it's recommended that you do 2 in one sitting. So, how can I apply for jobs in Microsoft, Google, and Apple if I'm already in industry, and what to prepare from that context, not as a college placement? So, for me, the switch between MakeMyTrip and Microsoft happened through referral. So, get in touch with whoever peer is working in any of these companies. Get a referral से ही मिलेगा opportunity. And then don't prepare भी करते रहना है साथ में. Take 1 or 2 hours every day out. And when you are switching from, I would say, as an experienced person, the interview gets different. It's different for a college student fresher, it's different for an experienced person. For an experienced person, the DSA questions might be a little simpler, not very simpler, but it will be simpler than the ones asked from college freshers. And you also have to focus on high level design and low level design. So for system design questions, refer to the Gaurav Sen ki YouTube videos. They are very helpful.
and any other online resources that you can find, but it is a definite that you should know how to design an architecture for a particular problem that they pose. For example, in Microsoft they asked me to design Swiggy. So how do you, where do you place your databases, how, which database do you use, how do you plan on scaling it? All these questions are asked. They are not asked from freshers, but they will be asked from a experienced person. And what else? And I think हो जाएगा. All the best. This is the difference कि questions थोड़े different होते हैं. Ma'am, this is also my personal question that do we pay for internships? No, you don't pay for internships. It could be free, but you never pay to go, pay to work. How will you pay to work? You will get paid to work. You don't need to pay for internships. If you really want to, if you, let's say internships किसी tech उसमें giant में नहीं लग रही है, always go for startups, because startups may you learn a lot, because you're directly sitting with the CEO, CTO, and you're like, okay, ये बनाना है, and then you deliver on it. So the learning is immense, and you don't have to pay for that. What's the future of software developer by the growth of AI, chat, GPT, etc.? Secure, Uh, how to secure this job? so I would say that ये तो in the next ऐसे 5 to 10 years, ChatGPT बंद कराएंगे. चैट जीपीटी बंद नहीं होगा, हम जरूर बंद हो जाएंगे. So this is how we have to transition ourselves, because with chat gpt we know a lot of us can be replaced, a lot of us have already been replaced when it comes to content creation, and all the content work has already been replaced. So as a developer I think we should deep dive into the AI, like ChatGPT, of course, is there, AI technologies, NLP, whatever is linked to machine learning and deep learning. We should all be aware about it if you're not actively working on it. And probably in your industry only, in whatever team you are working, just try to incorporate any scenario just जो ML से solve हो जाए. So even if you propose this in your team now, you will be like, oh, this banda is like thinking in a different direction and bringing ML into it. So my profile or my team is a full stack team, but still some of the solutions that we come up with include ML. So this is how we kind of mold ourselves. So yeah, it's like tech has always been a transitional thing. जब हम बच्चे थे तो हम क्यू बेसिक से स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ पर हैं. तो वी हैव टू इवॉल्व एज द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग. सो और हम डोंट वरी अबाउट, हमारी जॉब सिक्योरिटी तो होगी ही, इतना कुछ नहीं है. तो जो हर चीज़ तो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, चैट जीपीटी को चलाने वाला भी कोई चाहिए. सो आई थिंक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो हम इजी पार्ट्स में चंक डाउन करके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज अ होल पिक्चर तो डेवलपर ही कर सकता है. सो डोंट वरी अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट. And prompt engineering is also one of the way Yes, that prompt we can engineering is also coming do up. a efficient use of ChatGPT. Exactly. Oh, I think this guy is some sort of pareshan from the pressure. What can you tell me about the typical work atmosphere and level of pressure that employees Rohit, may experience in major multinational companies? Hmm. Yeah, this is for some companies. I think mostly I've seen in consulting that it is really hard to manage your work hours, but in software development it is fairly flexible. And I have seen a lot of people who are able to manage the pressures. So it's not like a constant pressure that we have in software development, but usually the pressure comes when there is a release going or things are going into production. So at that time you might have to push a little, but again on a daily basis you have to set your own limits. So if mentally you have in mind that okay, I will work from 9 to 5 or 9 to 6, make sure you give your 100% efficiency in that, and then turn it off. So in that way, you have to balance your work life. बट इफ यू से दैट ठीक है, 1 घंटा सो जाता हूँ, 1 घंटा काम कर लेता हूँ, 1 घंटा ऐसा रह दे, 1 घंटा काम, सो दैट might work for you, might not work for you, but it will affect your productivity in some way or the other.
And work pressure, if you're under a lot of pressure, talk to your manager. He will ease it off for you, and he will provide a solution. And if he's not able to, then probably talk to your tech lead about it, that okay, this sprint, this in this month I have a lot of work, I might not be able to cover it all, so can you please plan differently. And it is always better to, I would say, not overcommit and underdeliver. Overcommit करके कम deliver करो never helps. It's better to take जितना आप कर पाओ, और उसके पास टाइम बचे ना तो और मांग लो कि ये सब तो मैंने कर दिया, अब मुझे और काम दे दो, तो इट लुक्स वेरी गुड कि अच्छा इसने सब खत्म कर दिया और काम मांग रहे हैं, तो और दैट इज काम। बेटर. तो इस Yeah. तो इंस्टेड ऑफ कि हाँ मैं सब कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी ना कर पाओ, उससे बेटर है कि कम काम मांगो, उसको खत्म करो फिर और मांगो. Ma'am, I think Samarth is asking about your college, that which type of clubs and societies you have joined at that time. Is it I technical or it is some sort of like dancing, singing, artwork? So I was in the debating society, DebSoc, and I was in the eCell, entrepreneurial cell. So these two are societies that I joined. I briefly joined. I think these were the major ones that I contributed to. So debating, because I've always been a debater in college, so that was my interest. And eCell, because I wanted to learn a lot about the startups and how does the culture work. So Tell me a secret about Microsoft which only its employees knows. I think Aniket is I think very curious. I think secret is a secret for a reason. So if I tell you, how will the employees How will only it know? is a secret? So So sorry guys, I'll we keep it can't secret. disclose the secret like this in public. Ma'am, will you recommend an additional subject like DA or AI in second year? Unknown is asking. I don't know who is. Who is. Yeah, I think you it is recommended. If you have interest in that, go for it. But if, like, let's say if you are running low on GPA and low on marks, then decide accordingly. क्योंकि अगर जीपीए कम है तो एडिशनल सब्जेक्ट से, जिससे जीपीए, या तो तुम इफ़ यू नो इफ यू आर गोना एस दैट सब्जेक्ट तो वो ले लो. बट अगर जीपीए लो है तो फिर उस हिसाब से मैनेज करो कि हाँ जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए. एंड इफ जीपीए इज गुड इनफ, 8 वेट के अराउंड है, देन इट्स लाइक 7.5 8 इस तरह की है, तो फिर तो यू कैन टेक द एडिशनल सब्जेक्ट ऑल्सो, इट विल हेल्प. वैसे कोई पूछता नहीं है इंटरव्यू में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. दे जस्ट अज्यूम कि ऊप्स डीबीएमएस ओएस ये तो पढ़े ही होंगे. और एआई Yeah. का इंटरव्यू में इतना पूछते नहीं है अनलेस अ कंपनी इज स्पेसिफिकली हायरिंग फॉर दैट प्रोफाइल, so they mention it in the profile only. Ma'am, there is a question from our team. Microsoft culture and values are important aspects of potential candidates to understand. Can you provide insights into Microsoft's work culture and what qualities they value in their employees? Okay, so Microsoft, I think there are four major pillars of Microsoft. So one I have already talked about is the one Microsoft culture, that everyone can reach out to everyone. So there is no limit कि हाँ he or she is not in my team, I might not be able to contact him. So everyone is working together for a for helping, I would say, the larger audience. So they just keep it very open. So it's a very open culture. Then diversity and inclusion. Everything is ensured that everyone is made heard. You won't feel like you are being left out. So everyone is very inclusive, and they have special programs to incorporate special abled people also. And they make sure that they hire from every ethnicity, every race, every gender. So they are very diversified in that sense as well. And apart from that, Microsoft is customer obsessed. तो कस्टमर भगवान है, जो वो बोले वही करना है, जैसे जैसे वो बोले, we have to keep it in our prime requirements. And
the last one is the growth mindset. So everyone in Microsoft is aimed towards personal growth. So हमारे managers ही हमसे एक बात करते हैं which is like the CDP career development program. So they ask you कि what are your aspirations, एक साल बाद where do you want to see yourself, एक साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद. So you have that conversation with your manager and then they will help you in that growth. So, ma'am, will In AI be compulsory to get a tech job after 3 to 4 years? Hmm. AI not necessarily, because there I think there will still be people needed for writing backend code, which is because say, in this case, suppose a problem is coming to you, that problem might not be fully understood by a chat GPT or an AI, right? There are also rotating or changing requirements, राइट कि ठीक है आज ये डेवलप किया पसंद नहीं आया कल को चेंज करना पड़ रहा है सो अब what a developer can do कि changing requirements के साथ कैसे manage करना है उस चीज़ को कि कल जो पसंद नहीं आया आज वो उसको change करके minimum effort में minimum time में हम कैसे deliver कर सकते हैं. So these are the skills that are not मतलब AI नहीं कर पाएगा तो it's like developers की need तो होगी but obviously if there is AI and ML in your resume or in the work that you do it always helps क्योंकि eventually we are moving towards that. तो don't be an alien to that कि पता ही नहीं है कि क्या होता है. Have a good knowledge about it. If you can apply it in your work, well and good. Even if you cannot, just be aware. So that eventually अगर ऐसा कोई solutions आते हैं तो you're able to adapt or transition into it quickly. So, I think Samarth is sometimes sort of pulling the leg. There's ratio only is coming out with reason for it higher or something else. I am not sure yet. Once if and once I leave, I can let you know. This is very this is like very person dependent question. Whoever leaves might be able to answer this. Uh, so Mohit is asking that I am interested in preparing for interviews from right my first year. What strategies or steps to develop skills, qualification necessary to excel in the future job interviews? I think in your first year you should focus not on your interviews but on having a bond with this like connecting with the seniors because on seniors ko you can ask what is the culture in college and how are they doing things. So spend or invest time in that because वो फिर second third year onwards वो connections काम आते हैं. Lifelong काम आते हैं referrals के time even if you want to switch in the future तब भी काम आएंगे. So this is what you do in first year. Don't focus on a lot on the technical. Second year onwards, you can do it. Second year के बाद be very I would say focused on that. First year में explore. You can also not be adamant about कि नहीं मुझे coding ही करनी है. You can also go to I would say an MBA sort of background, consulting background, or if you are not liking coding, you can explore. First year is for exploration. So try as many things as possible and don't limit yourself. Second year onwards, have a focused approach. I Ma'am, think is we pure competitive programming wrap really it useful for sometime. placement? Raghav, I think we'll wrap it up in some time because it's been Yes, ma'am, I'm also thinking the same because it is getting so long. But our yes. So, audience is quite curious to know. yeah. So we can have a session after some days or some time. No worries. Yes. Because this is going so long, guys. So two, three questions more, ma'am, and then we'll wind up this. Sure. Yeah. So what type of extracurricular activities can help to get better placement? And I want to ask personally that what type of extracurricular activities are going in the company, in your company? What do you guys do for the fun? Oh, so for us, fun के लिए I think there's table tennis, there's chess, there's carom, and for the events, so we have every year we have potluck. Everyone gets something from their homes. We have games planned.
also, because not everybody can, join from office, and we have a hybrid culture. So virtual games are mostly played, and so that is like a monthly thing. So something fun or the other keeps happening. And you can do this in office work hours, or you are having separate time for this. No, no, it is planned in the work hours only from 9 to 6, and capacity is all like also adjusted according to that. Is pure competitive programming really useful for placements? Yes, but competitive programming is very useful because it helps you to time your solve solutions, and but it's not necessary. But it's a good to have. I never did competitive programming. I really never dived myself into it, but I've seen that people who were really good at competitive programming were acing on campus placements like this. So it is always good to have. If you are good in competitive programming, on campus placements and the coding, online coding tests will be a cakewalk. Theory is needed of for placement of any subject. I think concept is the main thing, na? Not Yes. all the theory is necessary. हाँ, they will not ask you for definition बताओ, but they will ask you concept क्या है. That When they if ask, they're asking first in first out, or some types of OS, or some oops concept, like what is the basic code, or you can, so they are asking for the loop, like there are loops, so loops, that how to मतलब apply the जैसे loops, how loop works. एग्जैक्टली Yeah, सपोज these kind oops of में things. there's inheritance, there's polymorphism. Definition नहीं बताना, एग्जाम्पल देके समझाओ कि होता क्या है. Yeah. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. Last but not the least, we can get questions covered in our next session. So, some internship tips and some scholarship tips for our audience, and for me also, because I also want to do internship. It's my third year now. इंटर्नशिप टिप्स मतलब इंटर्नशिप लग जाने के बाद की टिप. इंटर्नशिप नहीं फिर लगी है लगवाने. तो कैसे लगे? अच्छा. Yeah, that. कैसे लगे? यार देखो. And can you give a referral? हाँ, Just joking. I can give a referral, but not to all of you. There is a lot of audience. How can you give a lot of people a referral? नहीं, I think I can give to most, but not everyone. So I think initial level पे थर्ड ईयर में यार इंटर्नशिप्स के लिए एक तो अप्लाई करना ही सबसे ज़रूरी है. मतलब अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कुछ आएगा ही नहीं. सो वो नहीं होता, इफ़ यू नेवर आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो. सो इफ़ यू नेवर Yes. अप्लाई यू आर नॉट इवन देयर इन द डेटाबेस इन द फर्स्ट प्लेस. तो अंधा कहीं भी मत, कुछ भी मत छोड़ो, स्टार्टअप भी मत छोड़ो. ऐसा डोंट बी फोकस्ड ऑन कि सिर्फ जायंट्स ही जाना है. स्टार्टअप्स में भी जाओ, हर जगह अप्लाई करो, और जहाँ से भी आए कॉल सारे इंटरव्यूज दो. अच्छा बुरा जैसा भी हो, प्रैक्टिस ही होगी. ठीक है. और रेज्यूमे अगर कहीं ऐसा लग रहा है, रेज्यूमे रिव्यू करा लो अपने सीनियर्स से कि दिस इज माई रेज्यूमे, आप प्लीज इसमें टिप्स बता दो क्या मिसिंग है. रेज्यूमे में हमेशा इम्पैक्ट मेंशन करो. सपोज तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस है, या सपोज तुम इस हैकाथॉन में गए तो राइट की 200 टीम्स थी उस हैकाथॉन में और 200 में हम टॉप 10 में थे. तो इट गिव्स अ पैरामीटर टू जज या कंपेयर कि अच्छा 200 में से तुम 10 टॉप 10 में थे. अगर तुम लिख दोगे केम इन टॉप 10 टीम्स इन हैकाथॉन, पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू डोंट नो कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे. बट इफ यू गिव दैट रेशियो कि 200 में से हम टॉप 10 में थे, देन इट गिव्स मोर इम्पैक्ट टू योर रेज्यूमे और वट एवर दैट यू रिटन. इम्पैक्ट मेंशन करना ज़रूरी है. दिस इज हाउ योर प्रोफाइल स्टैंड्स आउट. बाकी तो आई थिंक आई कवर्ड मोस्टली. इम्पैक्ट बट ज़रूरी होता है रेज्यूमे में. Yeah, ma'am. So for the internships, I just want to ask that there are some platforms like Internshala, and we can apply through LinkedIn also. We can apply. There is a platform called Blue Learn. We can apply from that. So is these kind of platforms are okay or good enough to do this, or you suggest something else?
I think Internshala is good. During my switch, I heavily relied upon Top Hire and what is that one? Top Hire say I got a lot of calls. Insta Hire, and there's one more very generic one. Was it not Monster? Some, I'm forgetting the name. I'll let you know. But Top Hire and Insta Hire, I got a lot of calls from these two. So it helps so make a profile on all of those. सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बना लो इंटर्नशाला ऐसी बात नहीं है एंड इंटर्नशाला पे भी कुछ कुछ एक अलग से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो लिंक्डइन पे ना हो. सो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू ओनली लिंक्डइन. इन प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है. So I think that's all for today. And guys, I hope this session will add value to your learning and upskilling journey. And if you are having any type of queries, you can just ask in our community groups. So we can also answer it there. So we should wind up this, ma'am. I think, Sure, sure. yeah. Okay, thanks, Raghav. Thank you, ma'am. Have a nice day. Same to Bye, you. everyone. Yeah. Have Bye a good day. everyone. Bye. Yeah.